तो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है राज और आज ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज के टाइम में सक्सेसफुल सभी होना चाहते हैं जिसका मंत्र सिर्फ यही है कि आपको एक्शन विद लर्निंग पे ध्यान देना होगा। और लर्निंग आपको उन्हीं लोगों से मिल सकती है जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर लिया है और आज भी रुके नहीं है। वो आज भी इतनी मेहनत करते हैं खुद को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो का टारगेट होगा 30 लाइक का, तो आप उसे पूरा कर दे तो फुल ऑन मोटिवेशन के साथ लेट्स गो। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक और इंडिया में नंबर 1 रिचेस्ट मैन, जिनका नेट वर्थ $102 बिलियन का है, सक्सेसफुल होने के पीछे ये कहते हैं, Well, my advice to more than advice, I'll share what I have learned. I think advice to an entrepreneur is not appropriate, so I can only share. Like the first piece was really taught to me by my father in terms of saying that. So he says, and he first gave me when I had just come back from Stanford Business School. So I said, what is going to be my job? Please describe what do I do now? Roles and responsibility. In terms of roles and responsibility, absolutely. So he says, Acha, am I giving you if you're a job, then you're a manager, right? If you're an entrepreneur, you'll figure out what you want to do. So I'm not going to tell you anything, figure out what you want to do. Right? The second piece that I think I learned is that as an entrepreneur, right, it's very important to find a problem that you want to solve, that you are passionate about. Right? There is no, and this is the same thing that, in fact, Professor Sharma at UDCT, I was blessed to have him. He'd always say that I am not going to give you a list of problems and then you can go and work on anything. You find a problem. And then I will grade you on the quality of the problem that you find, and then I'll grade you on the quality of solution that you actually do. So the same rules apply for an entrepreneur, that it's not solving problems, it's first finding problems. Once you find the problem, right, then you solve it. गौतम अदानी। गौतम सर ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन उनके फैमिली सर्कमस्टांसेस के चलते उन्हें स्कूल बचपन में ही छोड़ना पड़ गया। और तब उनके पिता ने उन्हें 2 अनमोल बातें याद रखने के लिए कही थी। पहली, आपने जो भी प्रॉमिस खुद को किया आप उसे पूरा करो चाहे जो भी हो जाए, और साथ ही आप उन प्रॉमिस को भी पूरा करो जो कि आपने दूसरों को किया है। इससे होगा क्या कि आपके बातों की एक वैल्यू हो जाएगी दुनिया में और लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगेंगे। दूसरा, कोई भी सिचुएशन को ओवरथिंक करने के बजाय आप उस पर क्विक डिसीजन लो और अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट पे भरोसा करो। इसे गौतम सर ने अपने हर एक्शन में यूज किया और आज आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने क्या अचीव कर लिया है। इस इंटरव्यू की वीडियो भी थी, लेकिन उसे कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैंने यूज नहीं किया, लेकिन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। शिव नादर सर के बारे में आपको बताऊं तो सर HCL के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, जिसके बाद इनकी बेटी रोशनी नादर ने इनके पोजीशन को संभाला है। शिव नादर सर के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे जिसमें उनका कहना ये था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी ग्रो करने के लिए, और इसीलिए शिव नादर सर ने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी भी ओपन की है जिसका नाम है शिव नादर यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश नोएडा में है। रमेश दमानी, चेयरमैन ऑफ डीमार्ट रमेश सर की बात करें तो इनकी फैमिली में पैसे ने कदम तब रखा था जब हर्षद मेहता ने मार्केट को इलीगली ऊपर भेजा था। तब राधा किशन दमानी ने बुल को शॉर्ट करके अच्छे खासे पैसे बनाए, जिसके बाद उन्होंने डी मार्ट को खोला। और रमेश सर के सक्सेस का कहना ये है कि So the one lesson I'd like these young people here to take away from you is start investing early. Even small amounts invested early make a huge difference 10, 20, 30 years down the road. Let me put it in words that you will understand. Most of us will have a career of about 30 years. 30 years in the financial markets, 30 years as an architect, 30 years as a doctor. A professional career, 30 to 40 years come there. Let's say 30 years out there. Let's say you start off life when you're 25 and you save your first 10 lakhs. आपने 10 लाख सेव कर दिया, कैसे भी मेहनत करके 10 लाख बचा दिया आपने. Now you're able to double your money every 3 years. All right? Every 3 years you're able to double your money. The index itself goes up 16%. Right? So to double your money, you need to do about 21, 22% a year. It's not that hard. If you double your money every 3 years, in a 30-year career, you will have 10 doubles in your life.
10 times your money. You will have 10 doubles in your life. So suppose you start with 10 lakh rupees, all right? 10 lakh rupees when you're 25. When you're 55, can any young person tell me, if you double your money every 3 years, what will that amount become? Yeah, you're a CA or someone, you know all that stuff. He's right, okay? He's right. It becomes 100 CR. How does it become 100 CR? Let's do the math. Because it's always fun. I know you know this, but it's still fun, okay? 10 lakhs after 3 years becomes, if you double your money, 20, right? 20 becomes, 40 becomes, 80 becomes, now let's round it off, say becomes 3, that's after 5 years, 15 years becomes 3, right? Now see what happens in the next 15 years. 6, 12, 50, 100. 100. Think about it. If you have 100 crores, that even in today's depreciated rupee, that's about $10-15 million. That puts you in the richest 1% in the world. Forget in India. It'll make you the richest 1% in the world. All right? नवीन जिंदल के बारे में आपको बताओ तो नवीन सर जिंदल स्टील और पावर के चेयरमैन हैं। साथ ही सक्सेस को लेकर इनका कहना है कि आप कम से कम उधार में अपने बिजनेस को शुरू करने की कोशिश करो। आप खुद ही देखिए इनका इंटरव्यू। I would like to tell budding entrepreneurs that whatever they're trying to do, they should try to do it with minimum borrowing. And they should always remember what Shakespeare had said, neither a borrower nor a lender be. For loan oft loses both itself and friend, and borrowing dulls the edge of husbandry. So, you should never really, build your empire on loans, on borrowings. So try to raise equity, grow slowly and surely, rather than borrowing a lot and getting into a trap. So we have seen in the last decade in India, so many large companies, getting into trouble because of debt. Because sometimes policies change, the environment suddenly change, and then suddenly, you are sitting on too much of debt. The cost of capital is too high. So in the hurry to grow faster, it's no point borrowing. One should borrow very, very conservatively. And I can't stress this enough, because when you do not face problem, everything looks good and you feel that, oh, we just need money and then, we'll be able to repay in no time. But when things start to go bad, then they go bad from, all angles. So it's very important to be very conservative while borrowing. राकेश झुनझुनवाला। अब इनके नाम को सुन के आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं इंडियन वॉरेन बुफे की, जिन्होंने ट्रेडिंग करके करोड़ों की संपत्ति बना ली। और इन्होंने एक इंटरव्यू में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने की एक बात कही थी, जो कि आप इसमें देख सकते हो। वेल टिप्स एंड हार्डेस्ट और हेल्थ। और मेरी बीवी को नहीं मालूम है मैंने क्या दिया या बेचा, आपको क्या मालूम पड़ेगा। Although I don't mind anybody, मैं तो बोल देता हूँ। देखिए क्या है कि पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो हिंदुस्तान में कोई भिखारी रहता। मतलब दमानी जी ने क्या लिया, मैंने क्या लिया, हमने पहले 99% तो सब फॉल्स रहते हैं। लोग शेयर लेते हैं, लॉन्ग रूमर फैला देते हैं। और ये आई थिंक टिप्स आर वेरी वेरी इंजरियस टू हेल्थ। और दूसरी जी एक चीज ये मैं कभी टिप देना नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको बोल दूं कि आप XYZ कंपनी ले लीजिए और कल कोई चीज बदल जाए जो आपको नहीं मालूम है, ये आपको जिसकी समझ नहीं है, मैं तो शेयर बेच दूंगा। क्या मैं नागपुर आऊंगा आपको बोलने? सो यू लिव इन सच अ डायनेमिक मार्केट, सच अ चेंजिंग मार्केट दैट आपको हर चीज इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना पड़ेगा। रतन टाटा, इनके बारे में तो मैं क्या ही तारीफ करूं। इन्होंने अपने काम और खतरनाक निर्णय जैसे जैगवार को खरीदकर उसे सक्सेसफुल बनाकर साबित कर दिया है कि ये कितने अच्छे बिजनेसमैन हैं। तब इनके मुंह से आप सुनिए कि सक्सेस के नियम क्या होते हैं। How many times have you heard people say this can't be done? It's your job to remove those myths and to get things done. I think as you grow in your organization, you will find that you get lonelier and lonelier. You have less and less people to use as a sounding board, and your decision is eventually a lonely decision. Then you're forced to look at
options as you see them at that moment in time. And indeed, many of your decisions may not be the best. My own view on that is you should do what you believe is right. It may be the tougher decision, it may be the tougher option, it may be the more troublesome option that you have. But if deep inside you, you know that it's the right decision for the right reasons, not for the wrong reasons, then you should go ahead and take it, and take the flack if there's flack to be given, or humbly accept the kudos if the kudos to be given. And if you took the wrong decision, then hopefully you would learn from that when you take the next decision. तो ये थी भाइयों सक्सेसफुल टिप्स सक्सेसफुल आइकॉन की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हार कभी मत माने, लड़े और जीते। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।